this conversion may be required if you are comparing a LIFO firm to a FIFO firm. If you are comparing a LIFO firm to a FIFO firm, cross section analysis बोल रहा है कि टाइम सीरीज एनालिसिस बोल रहे हैं? Cross section. If you are carrying out a cross section analysis, comparing a US auto major to a French auto major, US auto major to a French auto major. French auto major is following IFRS, where LIFO is banned. US auto major is following what? LIFO. तो अगर LIFO कंपनी को FIFO कंपनी से कंपेयर करें तो IFRS वाला तो फुटनोट में कुछ बता रहा नहीं है ना कि हम लोग अगर LIFO फॉलो करते तो क्या होता, वो तो US का भी बता रहा है. तो we will have to convert US का LIFO COGS into what? FIFO COGS. But please ये कन्वर्ट मत करना नॉर्मल सम्स में. अरे कोई सम आया उसमें अगर एडजस्टमेंट्स करके प्रॉफिट रिटर्न और इक्विटी निकालने बोले, सम आएगा तो तुम रिटर्न ऑन इक्विटी के लिए इक्विटी को एडजस्ट कर दिया, 70 से बढ़ा दिया. अब प्रॉफिट वाले पार्ट में कोई हालत में COGS या प्रॉफिट को टच मत करना फॉर द चेंज इन LIFO रिजर्व. नो, अनलेस एंड अनटिल कंपैरिजन के लिए चाहिए. समझ गया? तो कंस्ट्रेन योरसेल्फ. डू नॉट चेंज LIFO COGS इनटू FIFO COGS. दैट शुड बी योर फर्स्ट मेंटालिटी कि LIFO COGS सही है, ठीक है, तो नहीं चेंज करना है. बट अगर कंपेयर करना है तो चेंज करना पड़ेगा. तो जो एंडिंग LIFO रिजर्व है 100 मिलियन, वो तो आज तक का COGS का डिफरेंस है. और जो बिगिनिंग LIFO रिजर्व था वो इस साल के शुरुआत तक का LIFO COGS का डिफरेंस था. तो जाहिर है द चेंज इन LIFO रिजर्व 75 to 100, 1 से 100, बिगिनिंग था 75, एंडिंग है 100. 25 मिलियन का LIFO रिजर्व बढ़ा. ओके, 25 मिलियन का LIFO रिजर्व बढ़ा इस साल के कारण. तो इस साल का COGS जो है ना LIFO वाला, उसमें से 25 क्या करेंगे? लेस. तो क्या है? COGS एंड FIFO. ठीक है, तो फॉर्मूला वाइज गलत चीज है. नॉर्मली फील होना चाहिए यार LIFO COGS तो ज्यादा है, उसको कम करना है, तो उसमें से LIFO रिजर्व का चेंज क्या करेंगे? लेस. LIFO रिजर्व का चेंज क्या करेंगे? लेस. तो व्हाट इज FIFO COGS? FIFO COGS is equal to LIFO COGS minus the change in LIFO reserve. ठीक है, COGS under FIFO is equal to LIFO COGS minus the change in LIFO reserve. ठीक है, can I therefore say that FIFO EBIT, can I therefore say that FIFO EBIT is equal to LIFO EBIT plus change in LIFO reserve? FIFO EBIT, FIFO, FIFO EBIT is equal to LIFO EBIT plus change in LIFO reserve. ठीक है, तो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड FIFO में कम कर रहे हैं, तो इन दैट केस EBIT FIFO में क्या आएगा? ज्यादा. Can I therefore say that FIFO net income is equal to LIFO net income plus change in LIFO reserve? No. Tax. Okay, FIFO net income is equal to LIFO net income plus post tax change in LIFO reserve. Post tax change in LIFO reserve. मतलब LIFO reserve 25 का 70%. 25 का 70% equal to what? 25 का 70% is equal to 17.5. तो 17.5 नेट इनकम में क्या होगा? ऐड. नेट इनकम में ऐड होगा, सिर्फ मिस्टेक नहीं होगी. बट इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया हुआ टेक्स्ट में, सम्स में मिलेगा नहीं. कारण क्यों कन्वर्ट करें? करेक्ट प्रॉफिट आया हुआ, करेक्ट EBIT आया, करेक्ट COGS आया हुआ, फालतू कन्वर्ट क्यों करें? तो यू विल नॉट फाइंड द प्रैक्टिस ऑफ दिस. I have also just spoken about it from a comparison point of view. Restrain yourself, do not do all this. ठीक है, adjust the balance sheet, do not adjust the income statement. Okay. Now, the last topic of discussion in inventory is general rule. What is the general rule? General rule is that LIFO reserve rises or falls. LIFO reserve rises. General rule is that LIFO reserve rises. LIFO reserve बढ़ता है. Why? Because we are assuming prices are rising, inventory levels are rising. General rule is that LIFO reserve rises because prices are rising, inflation and inventory levels are what? Rising. Exception हो गया, exception हो गया क्या? कि LIFO reserve is what? Falling. LIFO reserve is falling. That's an exception. LIFO reserve is falling. Two reasons: either because prices are falling or because inventory level is falling. Prices are falling or inventory level is falling. If prices are falling, पूरे साल में prices गिरे और अपने LIFO COGS दिखा रहे हैं बुक्स में, तब भी तो LIFO COGS हमारे लास्ट इन फर्स्ट आउट है. तो जो COGS दिखाया हुआ है वो करंट प्राइस वाले तो दिखाया हुआ है. तो ऐसा तो कोई बात नहीं हुआ. इसका सही COGS वो होता है जो ज्यादा होता है. We never said this. सही COGS, सही इन्वेंटरी वो होता है जो करंट होता है. तो प्राइसेस आर फॉलिंग, तो LIFO COGS जो है तभी तो करंट ही है.
वो अलग बात है कि वो गिरा हुआ है, तो होने दो, how does it matter? तो इसका मतलब if LIFO reserve is falling because of falling prices, no analytical adjustment required. No analytical adjustment required. No analytical adjustment required. If LIFO reserve is falling because of falling prices, it's a normal phenomenon. Do not adjust. LIFO COGS is correct. Do not adjust. But if LIFO reserve is falling because of falling inventory, which means फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसका 2-3 कंप्लेंट्स आ गया कि कोई मेडिसिन खाया कुछ हो गया, तो उस केस में उसके प्रोडक्ट का डिमांड अचानक से कम हो गया, एंड द कंपनी हैज देयरफॉर स्टॉप प्रोड्यूसिंग, प्रोडक्शन कम कर दिए, बंद कर दिए, और जो पुराना माल कैरी कर रहा वही वाला माल क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो इस साल सेल्स हाई है पर जो इन्वेंट्री वो तो कम हो गया, क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री लेवल्स आर फॉलिंग। नाउ फ्रॉम अ फंडामेंटल इक्विटी एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू, दिस कंपनी इज अ बैड स्टॉक टू इन्वेस्ट in, because the demand is falling. The company is not confident on its own self. जो confident होता है वो तो प्रोडक्शन बढ़ाता है, वो खुद ही confident नहीं है, प्रोडक्शन कम कर रहा है। However, उसका COGS तो extremely low होगा LIFO में, क्योंकि it is eating into the old inventory layers. कहाँ से माल बेचा है? इन्वेंट्री से, और इन्वेंट्री में कितने साल पहले का माल बचा हुआ है, it's using LIFO, तो उसके कारण वो बहुत ओल्ड वाला माल बेचा है, ओल्ड वाला माल बेचा है, तो LIFO COGS is what low, profit is what high. प्रॉफिट इज हाई, तो नॉर्मल क्या होगा, एनालिस्ट मिस्टेक कर सकता है। एनालिस्ट को क्या लगेगा, यार LIFO कंपनी है, उसका COGS तो सही है, प्रॉफिट हाई है, लेट्स रिकमेंड द बाय ऑफ द स्टॉक। बट द एनालिस्ट गॉट टू सी दैट look, LIFO reserve has fallen while price has gone up. LIFO reserve has fallen while price has gone up. इसका मतलब the company selling out of old inventory layers, old inventory layers. That is known as LIFO liquidation. What is called? LIFO liquidation. We call it phantom profit, unsustainable profit. That profit is not sustainable. Okay? And if it is not sustainable, while valuing equity, we would like to adjust the financial statements. So LIFO reserve falling due to falling inventory is known as LIFO liquidation. Is known as LIFO liquidation. Okay? The firm is selling out of its old inventory layers. It's having phantom profits, unsustainable profits. Okay, you got to adjust. Adjust what? Increase the COGS by the extent of the LIFO liquidation. Increase the COGS by the extent of the LIFO liquidation. Okay, analytical adjustment required. Analytical adjustment required. What to do? Increase LIFO COGS. Increase LIFO COGS to the extent of LIFO liquidation. To the extent of LIFO liquidation. LIFO liquidation का अमाउंट बता देगा फुटनोट्स में, नहीं बताया तो जितना से LIFO रिजर्व कम हुआ है ना, जितना से LIFO रिजर्व क्या हुआ है कम, वो पूरा अपना LIFO लिक्विडेशन मान के क्या करेंगे, ऐड, ठीक है। तो COGS को बढ़ाएंगे, हमारे EBIT क्या होगा, कम, और क्या सीधा तुमको COGS से मतलब नहीं है, तुमको दिख रहा है तुमको ROE निकालना है, तो थोड़ा टाइम पास करे, सीधा नेट इनकम में आना, और नेट इनकम को कम करना, नेट इनकम कम करना by the post tax amount of the LIFO liquidation, by the post tax amount of the LIFO liquidation, net income come and accordingly compute the ratio, ठीक है। So that LIFO liquidation वाला stuff, it was always important at L1 also, there could be such adjustment, which means very practically speaking, apart from all the side का ज्ञान, ये वाला टॉपिक अपने यही काम आने वाला है, एक एडजस्टमेंट का सम होगा, उसमें या तो LIFO, उसमें या तो दिया रहेगा कि LIFO रिजर्व इतना है, अपने को LIFO रिजर्व को इन्वेंटरी में ऐड करके और लायबिलिटी साइड में डेफर्ड टैक्स में ऐड करके पोस्ट टैक्स इक्विटी में ऐड करना पड़ेगा, खत्म ये चैप्टर। और या फिर LIFO रिजर्व गिरा होगा तो बोलेगा कि LIFO लिक्विडेशन इतना हुआ है, तो अकॉर्डिंगली जब ROE निकाल रहे हैं तो LIFO लिक्विडेशन वाला पार्ट से अपने को नेट इनकम को एडजस्ट करना पड़ेगा। आई थिंक इट एंड्स ओवर देयर, ओके, बिकॉज़ दिस इज नॉट अ चैप्टर इन आवर करिकुलम। इन्वेंटरी के ऊपर एंटर सेट जिंदगी में पैदा नहीं हो सकता है, ठीक है, जस्ट एक एडजस्टमेंट्स उसके अंदर रह सकते हैं, तो वो एक एडजस्टमेंट का डिस्कशन, ठीक है। यू कांट गिव इट अ लॉट ऑफ टाइम एट होम, यू शुड बी वेरी फास्ट थ्रू विद इट, ठीक है, एकदम सिंपल चीज। So that was inventory. Next, page number 83 में, page number 83 में capitalizing versus expensing decision. Capitalizing versus expensing decision. Now this is conceptually matching principle ना, matching principle. If you incur a cost and you reasonably believe that the cost is going to result in probable future economic benefits. If you incur a cost and you believe that the cost is going to result in
probable future economic benefits. In that case, you should capitalize the cost. You should make it sit on the balance sheet. You can make it sit on the balance sheet and then systematically and rationally expense it off in the future income statements over the period in which it is expected to generate revenue. Okay? So if we incur a cost and we reasonably believe that that it will result in probable future economic benefits, we capitalize the cost, we take it to the balance sheet, and then we rationally and systematically bring it to the income statement as an expense over the periods where it is going to generate revenue. That's called matching principle. But if we incur a cost and we believe that its benefits will accrue in this year, then we expense it off in this year. Whereas if we incur a cost and we believe that it is barbad, it is not going to generate revenue, you expense it off in this year. So you capitalize a cost only if you reasonably believe that it's going to result in probable future economic benefits. There is no doubt about the fact that property, plant and equipment should be capitalized. There is no doubt about the fact that salary should be expensed. But there could be dicey items like research and development, okay, where the management is doubtful about the probable future economic benefit. When in doubt, and the management is capitalizing it, that's aggressive or conservative? Aggressive. When in doubt, the management is capitalizing the expenditure, capitalizing it, taking to the balance sheet. That is aggressive accounting, that is poor quality earnings. Because when in doubt, you are capitalizing, that means aggressiveness. Aggressiveness. Your current year's expense would be lower. Your current year's net income would be higher. Okay? And also please keep in mind this thing. Eventually, total expenses, retained earnings and equity would be the same no matter whether you capitalize or you expense. Eventually. Because this साल capitalize कर रही है, तो इस साल PL में debit कुछ नहीं हुआ. But future में तो depreciation PL में debit होगा ही. So ultimately, eventually, the total expenses, the retained earning and the equity would be what? Same under all the methods. Okay? Year to year allocation का बात अलग है. Okay? Capitalizing versus expensing decision. Which means, just to slow it down, वैसे it's easy. Once you understand कि if I write capitalizing versus expensing, okay? So in that case, asset equal to liability plus equity, and revenue minus expense is equal to what? Profit. Okay? We incur a cost. Okay? And we capitalize it. If we capitalize it, it's a outflow under CFI or CFF or CFO. CFI. We incur a cost, we decide to capitalize it. If we decide to capitalize it, it's an outflow under CFI, which means CFO will be overstated. CFO is overstated. If you capitalize a cost, CFO is overstated. Is it okay with us? आप बोल रहे हो कि आप प्रॉपर्टी प्लांट बाय किए तो CFI में तो आउटफ्लो दिखा है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट. CFO में तो आउटफ्लो नहीं दिखा है, तो CFO क्या आपका ओवरस्टेटेड. और डॉलर कॉस्ट को अपने एसेट में ले गए, एसेट में तो एसेट क्या होगा? अप. एसेट इज अप. ठीक है? तो एक्सपेंस डाउन है तो प्रॉफिट क्या है? अप. एक्सपेंस डाउन है तो प्रॉफिट अप है, और प्रॉफिट अगर अप है तो अकॉर्डिंगली अपना रिटेन अर्निंग क्या है? अप है. इक्विटी क्या है? अप है. टेम्पररली अप है. Okay, so if we capitalize an asset, this is the impact. It results in higher CFO, and I'm telling you, US investors and firms, they focus more on CFO rather than profits. CFO को ज़्यादा credit देते हैं. So any way by which you can manipulate CFO is really entertaining because that can increase the share price. Again, if you show that your CFO is high, if you capitalize the cost instantly, आपका CFO higher होगा. देखो, asset बढ़ गया, यहाँ पे expense कम, profit ज़्यादा, तो retain earning ज़्यादा, equity ज़्यादा, temporarily. What will happen in later years? Later years में expense will be what? Higher, because depreciation होगा, and therefore profit would be what? Lower, retain earning lower, equity lower. Okay? But eventually it's going to make no difference, but periodically it's going to make difference. मैनेजमेंट का मन करता है तो CFO ज़्यादा दिखाए, मैनेजमेंट का मन करता है CFO और प्रॉफिट्स वगैरह स्मूथ दिखाए, स्मूथ, वॉलेटिलिटी कम रखे. तो जब भी वो लोग का
स्कोप रहेगा। तो एक